Hello everyone, Assalamu alaikum. Today my topic is MOD Ministry of Defense. Last video in MS Excel, very important MCQs. MOD Ministry of Defense, MS Excel last video. LDC Law Division Clerk, UDC Upper Division Clerk and Assistant. Important MCQs. Question number 21 है paper spreadsheets can have all the same advantages as an electronic spreadsheet except which of the following. तो इसका राइट आंसर है स्पीड। अगर आपने पहली दो वीडियो मेरी नहीं देखी तो पहली दो वीडियो देख लें। एमएस एक्सेल के लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन integrating MS Word and Excel, word is usually the इसका राइट आंसर है क्लाइंट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यू कैन ऐड एन इमेज टू ए template by clicking the insert picture from file button on the toolbar। तो इसका राइट आंसर है पिक्चर इसका राइट आंसर है। 24, क्वेश्चन नंबर 24। To drag a selected range of data to another worksheet in the same workbook, use the इसका राइट आंसर है कंट्रोल की से ड्रैग करके डेटा को लाया जाता है, कंट्रोल की। 25, इन ए वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट रोज एंड कॉलम, द एंटायर, ऑल की या ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, पूरी शीट को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। From which menu you can insert header and footer। इसका राइट आंसर है व्यू मेन्यू। 27, what term describes a background that appear as a grainy no smooth surface। तो इसका राइट आंसर ग्रेडियंट, ये एक फॉन्ट है, कलर है ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 28, Excel is a spreadsheet। Next question 29, to create an interactive pivot table from the web you use a Microsoft Office web component call। इसका राइट आंसर है pivot table रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what function displays rows data in a column और column data in a row। मैथ का क्वेश्चन है ट्रांसपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेन्यू। टूल्स मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 32 है, यू कैन ओपन द कंसोलिडेट डायलॉग। Consolidate dialog box by choosing consolidate from the menu। तो इसका राइट आंसर डेटा मेन्यू। ये थे एमएस एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एलडीसी यूडीसी में के पोर्शन में आने वाले एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्यूटर के पोर्शन में इंशाल्लाह आएंगे एमओडी। अगर आप एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया हो तो इन तीनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।